the making, the history, the background of the conference. The best part about the Aurangabad team is their people. Let's start with their conference director, Mr. Kasture. He's been exemplary. He's waiting to welcome you. Together we can make the grand conference here at Aurangabad. Together we can. Together we can. Together we can. Their NC member, Mr. Ravindra Kolarkar, he's been one of the finest professionals you can have in the country. Aurangabad is the fastest growing city in Asia. Their treasurer, Mr. Ashok Gurnale, highly meticulous and somebody whom every chapter would consider as a great asset. Don't miss this conference. Their past president, he's been an author and conducts some of the finest outbound sessions across the state. So I welcome you all participants to this Chhatrapati Sambhaji Nagar, and you know that this is the international center for tourism. Here you can have breakfast and tea. Aurangabad chapter promises to give you memories of a lifetime. Yes, certainly. And their chairperson, the principal, fit and fine, the exemplary and respected Professor Jai Prakash Bagade. We promise all of you to have health, happiness and harmony in relationships. I welcome you to Aurangabad and enjoy the conference. The speakers from the wonderful participants that we have. And it's our great privilege for the first part to hand it over to Mr. Neil Ramesh. Sir, over to you. We are all going to do it together. Yes. That's the theme, and that's, as Bagade sir says, it's not only the theme, we are going to practice it and do it. Sir, the first person should come here, running to me. Let's give her a big hand. Wonderful, great. Kriti from Nasik, let's give her a big hand. जानना और नहीं करना is equal to नहीं जानना. So we're going to live it today and we compliment you for your leadership. Only one lecture. शुक्रिया आईएसटीटी की तरफ से आपका बड़ा स्वागत, क्योंकि आज हम सब इकट्ठे हुए हैं इस नॉन कॉन्फ्रेंस कॉर्नर. देखिए आए क्या सदा दिल का है मामला. थैंक यू. Call me PD. जय हो जय हो जय हो. रोटेशन हो जाए, एक उंगली से हम ताली बजाते हैं. वही हम करते हैं. धीरे धीरे बारिश चल रही है. 3 उंगली से जरा जोर से बजाइए. 4. Conference is not totally unconference. There is conference in the unconference. So let's look up to our conference director. Now 3 fingers. Now 2 fingers. मुझे करना है सर. Bhavik and I am from ISTD Anand. Sorry, आप सभी फिजिकली हो या मेंटली हो कि नहीं मुझे चेक करना है. चलिए आप सभी करना है. जो 1 है वो 5 है 1. क्लियर? और फास्टली करना है. चेंज 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 चेंज. जितनी बार स्पीड में कहो इतनी बार करना है. आर यू रेडी? यस. चलिए चेंज change, 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 change. You'll have to do along with me and say along with me, okay? Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Everybody. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1, 1, 1.
बहुपुत्रं लाभं शतसंवत्सरं is a day of your life which will never, ever come back. It's an historic day. You want you could stand up. Only 2 words, quality and आपका नाम. Name only. दोस्त पारिजात. Sanjay Sai. पेशेंस बना रही I am possible, Kiran. हाँ sir. शांत सतीश. Humor. Dilip Desai. Humor. Dilip Desai. Yes. Passionate Denzel. Passionate Denzel. Passionate lover, Louisa. We tell that because you are 77 it will be difficult. She said, "No, Baba, because it is 77, I have to come." Creative Rupal. Wonderful. Adventurous and lively Krupa. Lovely Vasant. As you come into this world, do something, leave some mark behind. सिस्टमैटिक एग्जीक्यूटर सुनील, कूल एंड काम पंकज, दिलवाला सुधीर, पॉजिटिव दिव्यांग, योगेश, Passionate Ashok. Smiling Sanjay. Passionate Kumardini. Learner Rashmi. Positive Trupti. Adventurous Anita. मस्तीखोर मेहुल Patience Manisha. Unstoppable Jyoti. Appreciative Atul. क्या सबको मजा आया? मुझे भी आया. रंगीला रमेश. End on a serious note. We are all here because of a contribution of lot of people. Very popular, very meticulous Sri Ravindra Kolhatkar sir, Vinari sir, the treasurer of छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय. टुगेदर वी कैन जो है, ये तो जो मंजिलों पर चलते हैं वे शिकवा नहीं करते, जो शिकवा करते वे कभी भी मंजिलों पर पहुंचा ही नहीं. ये रंगीली रात में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ. हमारे टीम का नाम है सत्ते पे सत्ता. तंदुरुस्ती की रक्षा करता है डैश 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 है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ. 3 cheers for the audience. बाळ शिवाजीचा बाळ शिवाजीचा. Team of 8. Our name is Infinite. Just hold on and look at us what we are doing. नमस्कार दोस्तों, हमारी टीम का नाम है ISTD के 9 रत्न. ट्रेनिंग देता है, ट्रेनर्स को डेवलप करता है, कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में ट्रेनिंग भी देते हैं. कॉन्फ्रेंस क्यों लेते हैं? मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दिखता नहीं है. मम्मी, मैं तुमको मम्मी दिखाई दे रहा हूँ. पर दर्द किसी को दिखता है क्या? वल्लवरे रामा वल्लवरे नकवा हो वल्लवरे रामा. मी डोलकर छत्रपति संभाजी टीम की तरफ से सबका हार्दिक स्वागत. टीम का नाम छत्रपति संभाजी, मेरा नाम सुधीर, मेरे सहयोगी का नाम है Myself Usha. Jyoti. जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे. Since you all want the song again, we will repeat it for you. Okay? I am Louisa.
The team name is Chingat. Surendra from Nagpur. Anybody not dancing? देखना पड़ेगा. Ready sir? नंबर 3 एंड नंबर 4 फिंगर अंगूठे से दबा के रखने का है और जो अंगुली है वो स्ट्रेट रखना है. दिस इज कॉल्ड हार्ट मुद्रा. इट गिव्स रिलीफ टू हार्ट पेशेंट्स and then we must chant the any type of mantra. It may be Omkar, Kumbhak, and now chanting. Here also Ajit Kumar. चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए. कुछ करिए बस बड़ा बोले अब कुछ करिए. ओ कोई तो चल सिर्फ फड़िए तू बेहतर ने बोला डाल दो.
लोग जीते. एक मिनट Hand on her, my wife. लक्ष्मी महाराज के टीम के जीत के लिए आईएसटीडी टीम के जीत के लिए कोई तो चल सिद्ध खड़िए, तुम पे करिए जाएंगे, हाय कोई तो चल सिद्ध खड़िए, तुम पे करिए जाएंगे. दूसरे पे हंसना बहुत अच्छा लगता है. Duryodhana, he went to Lord Krishna. We are going to have war and I want help from you. He said, because you two brothers are fighting, so I have two options. One side I am alone available, other side is my army. And I will not lift weapon, I will not fight war. You can choose. And you know Duryodhana chose, what he chose? Army. When we talk about teams, first is we talk about purpose, then we talk about direction, and then we talk about duration as well. So the purpose of our this conference is together we can. So that's the purpose with which we are, and this team is coming together, who has organized Aurangabad team and the regional vice president and all of them. Telling in Mahabharata, Pandavas, as he said, they have a togetherness, physically, mentally. But whereas Kauravas, physically they are together, but ideologically or called psychologically, they are not together. They have their own different ways of thinking process. So that's why the Pandavas together, maybe the Krishna is helping and clarifying whatever the doubts the Pandavas are having, and he is giving direction to the Pandavas. First thing is mentoring. He wanted to make me a trainer. So he wanted, without even asking my immediate boss, he sent me for a training program. And the second one is the relationship. I was worried about my family and he took care of that also. So if a leader develops such type of relationship with... The best example is new water of Singapore. Singapore, you know that is hardly 18% of rains. Until 2026, there was a pact between Malaysia and Singapore that Malaysia would be providing drinking water to Singapore. But Singapore ultimately started working on it, and in 2014 itself, because of the futuristic approach, in 2014 itself, they generated the best quality of drinking water from the domestic waste of Singapore people. That's a great thing. If you go to Singapore, please visit that plant and you will be getting a bottle. One brain, which is the logical brain, which is the analytical brain, it takes decisions after thinking. And then we have the subconscious brain. This brain is fast,
snap decision it takes. In fact, it works 200,000 times faster than the conscious brain. So it works so fast. How does it work so fast? Because it's based on instincts. It's based on patterns. It's based on data that our brain is organizing in our mind. Now, mostly this instinctive subconscious brain is good. Imagine, driving and waiting at the red signal, and then the logical brain taking over. Red signal dikh raha hai, abhi main kya karu? We're going to probably crash. So the unconscious mind is good, but thoda bugs hai system mein. Experienced, and I can confidently say today that whatever little I have grown in my life, one of the contributing factors to that was Pareto principle. The professor who taught me. I look at Pareto principle in a little different manner. All principles, all concepts evolve, and all trainers bring their own flavor to those concepts. I do the same thing. Why do 80% of the activities give you only 20% result? We all know the Pareto principle, but have you ever asked this? Why do 20% of the activities gives us 80% result? Have you ever asked this? आपके दोस्त का फोन आता है, मेरे पास सिनेमा की 2 टिकट है. कौन सा नया पिक्चर आया था वो? पठान का भी टिकट है, चलेगा क्या? अगर आपने हाँ बोल दिया, आपको आपकी पूरी प्रायोरिटीज पानी में छोड़कर उसके साथ जाना पड़ेगा. आपके वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, फैमिली का एटमॉस्फेयर खराब हो सकता है, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर एन एंटरटेनमेंट which is not scheduled by you. Stephen Covey says your entertainment should always be scheduled by you. Dates are there. Coconut is there. And 3-4 dry fruits are. All the delegates present out there, more than 100 plus. That's truly a good number. So, as the theme says, together we can. So, yes, together we really can do wonders, and this is the right example.
Pauli, 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 Pauli. दिव्या दिव्या दीपका काळी कुंडल मोती हार भारत माता की The art of storytelling. Over to Madam Rashmi. He told me that you are to use the OHP, overhead projector. I said, I have never used, so please excuse me, I will manage. I came to the training head's cabin. He went out, he took the feedback and he came back. He said, excellent feedback, you are doing well. I said, that is okay, but I am under tension. I have now completed all the material. मेरे पास अभी है ही नहीं कुछ, तो मैं बोली कि अब क्या करें. उन्होंने मुझे सवाल पूछा तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि भाई मेरा काम प्रेजेंटेशन देना नहीं है, मेरा काम सेल्स करना है. फिर भी मुझे लगा लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी. हमारी इमरजेंसी में हमारा वर्क हुआ, ग्रामीण बैंक का हुआ, और वो सब देहात में गए और हम भी देहात में गए. अब मैं कौन हूँ? तो मैं वो जो आप 3 इडियट्स देखे 4th इडियट मैं. आप बोलेंगे 4th इडियट कैसे? मैं ब्यूटी एंड वेलनेस से कनेक्ट करती हूँ और ट्रेडिशनल फैमिली से रही होगी, लेकिन मेरी मम्मी ट्रेडिशनल फैमिली से नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे यहाँ पे मतलब ब्यूटी का कोर्स करने के लिए. हम लोग जीप से जा रहे थे, देखे कि एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है और उसकी कुछ गाय बकरी चला रहे थे. बोले चलो इससे बात करते हैं. उससे बात करो, अरे फिर मजा ही मजा है, मजाक करोगे? बोले बाबूजी वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ. ये इट वॉज प्रैक्टिकली हुआ है. मेरे दोनों घुटने छिल गए, दोनों कोहनियाँ छिल गई. वापस में घर आया और पापा ने बोला डेटोल लगा दिया. फिर बोला कि जाओ सीखो. मैंने नहीं पापा चोट बहुत लगी है, बहुत दर्द है. तो उस समय तक पिताजी ने बोला था अभी सीखोगे नहीं तो फिर घर के अंदर आना नहीं है. पापा ने बोला कि ये बात मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, कोई भी काम तुम बीच में न छोड़ो. तो उस समय एक वर्ड बोला पापा ने, ट्राई 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 अंटिल यू सक्सीड. और वो दिन था और आज का दिन है. 20 साल का वो हाइट का फोबिया था. तब मुझे ऐसा लगा कि मैं मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ, सबको कह रहा हूँ कि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ. तब मुझे पता चला कि मुझे चैलेंज लेना पड़ेगा. तब मैंने इंडियाज हाईएस्ट बंजी जंपिंग, तो बंजी जंपिंग है ऋषिकेश में 83 मीटर्स, यानी 23rd फ्लोर से आपको नीचे गिरना है शीर्षासन पे और कोई धक्का नहीं लगाएगा. तो मैंने कभी वो वीडियो नहीं देखा था, लेकिन वहां पर मैं पहुंचा क्योंकि मुझे मेरा लास्ट ब्रेथ तक मुझे वो स्टेज फोबिया, जो कहते ना कि हाइट फोबिया से मुझे वो साथ में लेके नहीं चलना था. डियर फ्रेंड्स, उसके बाद पैरा मोटरिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग सब कुछ किया और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप भी किया और आज मेरा एग्जाम्पल ट्रेनिंग में मैं देता हूँ. थैंक यू. We all know what an entrepreneur is. An entrepreneur is someone who looks out for the need of the society, to solve a problem, to do something good, better, to change. And we are talking about change. Little exercises about change is what we just saw about. And we know change is difficult, but change is inevitable. A week for today, I will just explain what a Zen entrepreneur should do in a very simple language, and what a Zen entrepreneur should do in a very simple language. एज ए ट्रेनर अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एंड वी ऑल नो दैट becoming an entrepreneur is not a easy task. It is not a easy journey. Kind of transcend kind of thing. Then it is a business model. You should switch on to a allied business or some other business, which again calls for these kind of challenges. मेरा सिंपल फंडा ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप और वाइफ में बहुत अच्छी है. What as an entrepreneur we have to realize that whatever planet on which we are living and whatever problems we are seeing on this planet, an entrepreneur would like to find some solution for this. But while doing this, he should realize that we are getting this planet as an inheritance for us, and what we are leaving it for the future
generation. Why we are here to look at our future, ISTD 2.0. Now when it comes to ISTD 2.0, there could be several things that we can discuss. But while we are discussing so many things, we also need to see that in a given time, which are vital few. ISTD, the leadership is really dynamic. So what I'm talking about is the leadership development is outside. We are developing, we are growing, we are talking about entrepreneurship, we are talking about businesses. I'm the youngest ISTD member in this respected delegates at this conference. So the key area that we need to work on is adding several young members in ISTD. How will it work? So I have few points. Can we have a discount membership for the members who are 30 years or below 30 years? Earlier there was, I think, a discount even for the senior citizen. Yes? Government departments, academia and professional bodies. I will little deviate from the topic which has been given, and will come to latest the Western Regional Conference that we have organized. Since started, we had every week a program. We call it Friday Forum. So every Friday evening, 5:30 or 6, as per the timings of the members, we What is the reason you are working for? Anybody? इतना difficult question है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा इतनी जल्दी. To earn something, you love doing it. Satisfaction. Why do you need satisfaction? Touch it, feel it. Feel it. Soft, like the soft nail. Feel a very interesting shape. Look at the little contours. Now, mindfulness is that, being aware. हम लोग aware नहीं रहते हैं अभी. आपको आधा bite करना है. Hold on. In the Chennai National Council meeting, there was a young boy whom our National Vice President, Mr. Sambasiva Rao, used to walk with. So I used to ask him, people said it's his grandson. So it was. Often I used to tell him, and he calls him Pandu. And then occasionally I used to speak to him, and he calls him Samba. The grandson calls Mr. Sambasiva Rao, whom we call respected sir, he calls him Samba. It was only some days back that I came to know it was not his grandson. It is some faraway friend who is financially very poor. And he felt that this man cannot take care of his grandson, of his son.
So he said, I will do something for him. Now he didn't want to take him away from his family. So he said, let him come whenever he is free on weekends. And what is he doing on his weekends? He takes him all around. If he goes for a training program somewhere, he takes him around. And for the last few years, he's been saving 3 lakhs every year. So that I think when he comes to the time of his 12th, he will have 1 crore. So, that's our National Vice President, Mr. Sampasivarao. Sir, congratulations, and we are proud to say that you are a real great ISTD here, sir. And it would be nice to have Pandu here with us, sir. You're a great example. Thank you, sir. No, I have given a choice too, because his mother's sister is there in Bombay. I asked him where you want to go. First he said, you'll come to Aurangabad. Then they said, no, you are coming all the way, why can't you drop him in Bombay? Then I thought, I drop him in Bombay. Now he is enjoying in Bombay. He is totally independent, sir. He is totally independent. How old is he, sir, now? He is around 4.5. 4.5? Yeah. And independent. Last he came to Chennai, I booked a taxi. Along with the taxi, he has gone to entire city. He back in the evening by 7 o'clock. Wherever I go, I used to take him. I engage a taxi. I give the instruction to the taxi fellow. Wherever you want a park or a movie or anything, take him and he will mingle with all the people. Just in the 4.5 years. 4.5? Yeah, 4.5. Who part of his bank's job had to go to different countries, and he went to Bangladesh. And when he went out to Bangladesh, a few of his team members and all went to a hotel to have khana. They have a breakfast or something. They had breakfast, many of them, but the breakfast was quiet, so they left something in the plate. As soon as they came out, some boys ran into the hotel and their leftover khana pakad ke bhag ke leke gaye. So he was surprised at this action, What are these people running around and what is the hotel doing, allowing people to run in? So he asked the manager, "Bhai, aisa kaisa ho raha hai?" He said, "Nahi, garibi bahut hai. And people don't get food to eat. Maybe it upsets the hotel's reputation, people run it, but at least unko to kuch milega khane ke liye." He went around in Bangladesh and saw the level of poverty there. People with tattered clothes. And a senior man in the banking sector decided to give up his job and landed up starting off an institute or an initiative to help people study. He trained people for different levels, even for GATE exams, young people, and really tried a lot to help young people grow. He left his job basically at an age of 50 taking special VRS. Even now he's been actively involved in helping people grow. Ladies and gentlemen, one of ISTD's heroes. Conference Director, Mr. Sunil Kastore. I mean, these are great stories. And these are great stories of our own people in our own hall here. And there will be so many more stories. Short stories which we want you to hear, want you to share. Okay, sir, one line. 1 minute of what you would like. Thank you, Adilji. That incident made me to think differently. और मुझे ऐसा लगा कि if that problem is of बांग्लादेश, अभी जैसा अतुल जी के पास कुछ प्रॉब्लम है, तो we can give sympathy to Mr. अतुल. मगर प्रॉब्लम आखिर में जो है मिस्टर अतुल को ही सॉल्व करना है. So the problem related to Mr. Atul's family is to be resolved by Mr. Atul only. उसको थोड़े बड़े पैमाने पे लेके गए. तो if this is the problem of Bangladesh, then only Bangladesh people will have to solve it. और वहाँ जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो थे, अभी सबको मालूम है आपको एसएचजी का जो मूवमेंट जो है, he has started. Professor Mohammad Yunus was professor in Oxford University.
he left that job for the country and he returned back to Bangladesh and serving Bangladesh. तो उसमें ऐसा थोड़ा लगा कि at the age of 50 I'm financially otherwise okay. I will just think and start doing something of this kind कि जहाँ से जो है लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे. And I'm involved in that. एक छोटा सा स्टोरी विद योर परमिशन बोलता हूँ. ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैडम ने बताया, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देयर इज वन मिस्टर कांबड़े. छोटा बच्चा था, समझ में नहीं आता था, घर में कुछ झगड़ा हुआ, छोड़ दिया रत्नागिरी और वो मुंबई में आके स्थित हुआ. मुंबई में आके क्या हुआ कि खाने पीने के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो ही यूज्ड टू स्टे ऑन द रेलवे स्टेशन. वहां जो भी मिलता था खाता था, थोड़ा बहुत काम करता था और पैसा कमाता था. एक दिन उसको किसी ने बताया कि इसको मार दो, मैं 10,000 रुपए देता हूं, और उसने मार दिया तो इसको 10,000 मिले. सो ही बिकम भाई. और उसके बाद लगातार एक के बाद एक उसने 8 खून किए, और ये 8 खून करने के बाद जो है वो पकड़ा गया मुंबई पुलिस से और उसको आर्थर जेल में डाल दिया गया. आर्थर जेल में काफी 17 साल का इम्प्रिजनमेंट वो जो हुआ. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो भी जेलर्स आए अच्छे लोग थे, अच्छा उसको सिखाया शायद, तो उसका मन परिवर्तित हो गया और अपना जेल अथॉरिटीज ने जो है उसको रिलीज किया 17 इयर्स के बाद में. उसके बाद में जो है वो सीधा मुंबई से रत्नागिरी आया. रत्नागिरी में हमारा वो एक बैनर देखा उसने ट्रेनिंग का, एंड ही जॉइंड वन ट्रेनिंग प्रोग्राम गो ट्रेनिंग वाला. और वो ट्रेनिंग लेके जो है वो हर दिन डायरेक्टर को पूछता था कि मुझे लोन मिलेगा क्या ट्रेनिंग होने के बाद, और डायरेक्टर उसको विश्वास दिलाता था कि भाई मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और आखिरी 10वां दिन तो जब था सब लोग चले गए, इसने फिर वही सवाल पूछा और डायरेक्टर ने बताया कि क्यों मैं बार बार पूछ रहे हैं. जब उसने थैली में हाथ डाल के जो उसका रिलीविंग लेटर डायरेक्टर को दिया तो कुछ देर के लिए डायरेक्टर भी थोड़ा घबरा गया, मगर बैंक ने उसको लोन दिया और सही ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आज रत्नागिरी में खुद का जो है बिजनेस कर रहा है गो ट्रेनिंग का. और दिस इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन यू आर रेफरिंग मैडम. सो रियल ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव सीन इन मिस्टर कांबड़े आल्सो. थैंक यू वेरी मच. After retirement, I was earlier with Sadhva Group, and I retired after 60 years from Mumbai. Then I came down to Nagpur and I did my LLB and LLM. And after that, again I got the job in Samruddhi Mahamal. So I am looking after all Samruddhi. वर्ल्ड में करना, चेंज लाना बहुत इजी है, लेकिन ये धारावी स्लम्स में कोरोना की बात थी एंड दे वर टॉक अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इंडिया इज गोइंग टू बी फिनिश्ड. एंड वन ऑफ द रीजन वाज धारावी. वहाँ एक बार कोविड आ गया तो फिनिश्ड. But the way it was handled, it was amazing. Among the people who did it was Dr. Ajit Salvi. Amazing work. Interesting part about Salvi साहब की जो स्टोरी मैं पूछने वाला हूँ, ये स्कैवेंजिंग वर्क जो है, that used to be going on. And आपने उसके बारे में क्या किया सर? And वो एक बहुत interesting thing for all of us to learn. सर जी. अतुल सर ने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा एंड विद सम लिमिटेशंस, टाइम लिमिटेशन. 2 minutes. ठीक है. शुड आई टॉक अबाउट धारावी और स्कैवेंजिंग? आई थिंक स्कैवेंजिंग के बारे में आई विल टॉक लेटर ऑन. लेट अस टॉक अबाउट धारावी. से पर्टिकुलरली इफ यू रिकलेक्ट मार्च 2020 और अप्रैल 2020, सबको पता नहीं था कि व्हाट विल हैपन टुमारो. And just try to recollect, particularly those who are from the big cities and WhatsApp use करते हैं, कि news from the European countries was coming, particularly Spain and all helpless. You remember? They were helpless. And what will happen? And nothing is going to save us. In that time, particularly in Mumbai, there is a slum area like a Dharavi and all. All, please bear me, please bear me. All so-called corporate people, white collar people, they were talking. Even my schoolmates, my college mates from the engineering, say they were posting on the WhatsApp group
Mumbai where there will be a lakhs of say dead bodies and it will be hills will be there, and these people cannot manage that, because if European countries cannot manage, what will happen in Mumbai? But you will believe that later on we took the challenge. See, Dharavi, it is the only 2 point. Dharavi ki that the job of you were directly involved with it, sir. मैं बोल रहा हूँ Dharavi that it is only a 2.78 square kilometer and population of 10 lakh. कितने लोग बैठे हैं देखो, तुम्हारी सिटी का पॉपुलेशन क्या है वो. धारावी गोवा का 15 लाख है. 2.7 kilometer, so say 7 square kilometer area and 10 lakh population. That is one thing. But don't consider it as a slum. धारावी में 5000 GST registration है. कोई फाइनेंस वाला है वो समझ लो. Those who are from finance, please understand. 5000 GST registration है. And lots of, say, I have published my research paper on Dharavi. So there is, in that I have already given all data. अभी अतुल सर ने मेरे को यार पीछे से बोल्ड कर दिया. Easy, थोड़ा difficult करते हैं. So when I say up, you're not going to do down, and when I say down, you're not going to do up. So the opposite of what I say and not what I do. Just press this HDMI. Ready? 1, 2, 3, up. Sir, this was trial, okay? So when the moment you say, I say up, you have to do down. Yes, sir. Up means down. And down means up. Ready? 1, 2, 3, up. No, you must keep your hands down. She will say what? Down. Down. South Dada. South Sir, down kiya. The others can put their hands down. South Dada is going to sing 2 lines of any song. Yes. Okay, song. Odia song. Come on, sir. Start. Okay, my God. उड़िया चलो ओके उड़िया मजा आया. रंगवती रंगवती ओ रंगवती रंगवती ओ रंगवती. मजा आएगा तुम कुछ भी बोलो तो कोई नहीं समझता. रंगवती रंगवती कोना कोनाता मुझको देखो नागेशा. रंगवती रंगवती कोना कोनाता मुझको देखो नागेशा. लाजे लाजे गो लाजे 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 गो लाजे 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 नई जाऊचे मथा गो नाइ कोन ना न कथा. आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थक न तेरा ये तन हो. आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो. तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू. कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू. मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे. ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे. तू आजा रे.
आशाओं के कभी बुझ न पाए, कभी आंधियां जो आके को बुझाए। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। Jalva, yo blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva, give it to me, Jalva, give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Yes, hot booty, come on, baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell them like it is. I couldn't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. आग सी रवानियां, लेती गए अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। She got the stalling in her. Not even smiling in her. She got the stalling in her. Feel the rhythm is in the air, shake it alone, yeah. Keep swinging in style, you by my side, as the music is soaring, going shouting and roaring, dancing on the high road. है अदा का नजराना, हर जुबां को अफसाना, हर किसी पे छा
गया जो जहां मेरे जो जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक हंसी और मैं जवान तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान चांद आहे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे चांद आहे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम दिखाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर ये चांद हंसी इन सब से हंसी मेरा दिल भर और तुझसे हंसी और तुझसे हंसी तेरा प्यार जरा छूने दो ये नयन डरे दूर रहता है हल्का 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 सुरूर रहता है थैंक यू सांसों की जरूरत है जैसे सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए चक दे हो चक दे गिरिया चक दे
ये हमारा टीम वर्क डांस है। जितना भी हमने सीखा है इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट में जो भी वो करेगा हम लोग करेंगे, करेक्ट। हम लोग को अपना अपना स्टाइल रहेगा, लेकिन अपना अपना स्टाइल थोड़ा टाइम घर में रखो एंड हम लोग टीम के लिए एक साथ में करेंगे। और उसमें क्या मजा है, ये हमारे आईसीटी ग्रुप पे डालने वाले हैं। ओके वो साहिबा, ओके विक्की तू बराबर कर रहा, वी आर फॉलोइंग यू कोरियोग्राफर एंड ये दोनों हमारे सिंगर, 3 सिंगर्स है। गिव अ बिग हैंड टू ब्रिज भाई, अपने सुरेंद्र भाई एंड पीडी सर। ये हमारे अमिताभ बच्चन है, ये धर्मेंद्र है, ये हमारे ठाकुर है, ये हमारे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन लो रे मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार हर जान से भी खेलेंगे, हर तेरे लिए ले लेंगे, हर जान से भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए। आज हरियाली हरियाली हरियाली, आई माझी लाडाची लाडाची ग, अंगुरा हिला चंद्राची चंद्राची ग, नवराई माझी नवसाची नवसाची ग। झमाझम नाच आजे, धमाधम ढोल बजे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा, ओए नाचो सारे, अपनी फेमस है रात वाली यारियां, जाने सारा जहां। थोर मां सुन ले ओ छोरिया, झूमे नगरिया, जब जब ये घूमे, हमारी यार तारी हमारी यार, हमारी यार तारी हमारी यार। थोर मां सुन ले ओ छोरिया, झूमे नगरिया, जब जब ये घूमे, हमारी यार तारी हमारी यार, हमारी यार तारी हमारी यार। से सीधा अम्मा वादा आया, खेलने के लिए संग टकरिया खिलाया। Baby girl, what is your name? अच्छी पहली नजर में हो गया कि तुमसे प्रेम अच्छी। उनकी फीलिंग है क्यों होना जज्बाती, जज्बाती क्यों होना जज्बाती। छोरे स्वाद वाले छोरिया है नखरे
सुनी बोल जागो जमाना है बम्बारी यार लाल बम्बारी यार बम्बारी यार लाल बम्बारी यार पीने वाला सलाम करो बापू खाओ पियो दिल को आराम करो दोस्त के लिए मैंने आइसक्रीम मंगाया 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 लड्डू खाने वाला दोस्त को सलाम करो बापू खाओ पियो बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए हम मगर और थोड़ी सी लगे तुम्हें जीवन की ये नजर बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और थोड़ी सी लगे तुम्हें जीवन की ये नजर अतुल सर भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। One more beauty of this mantra is when you chant this. आपको मालूम पड़े कभी आप सांस अंदर ले रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं आपका कपाल भाती भी इसमें हो जाता है ना। तो ये बहुत ही अच्छा है कम से कम
इसमें क्या जो भी हमारे इष्ट देव है उसके बारे में सोच के इसको कर सकते हैं। King of the ring, Maro, Maro. Thumbs up, thumbs up, thumbs down, thumbs up. Making a memory in my heart. Making a memory in my heart. To the King of the ring. Thumbs up, thumbs down, elbows out, elbows in. Making a memory in my heart. Making a memory in my heart. To the King of the ring. Thumbs up, thumbs down, elbows out, elbows in, legs apart, making a memory in my heart. Making a memory in my heart. To the King of the ring. Thumbs up, thumbs down, elbows out, elbows in, legs apart, knees bent, making a memory in my heart. Making a memory in my heart. To the King of the ring. Thumbs up, thumbs down, elbows out, elbows in, legs apart, knees bent, no, bum out. Making a memory in my heart. To the King of the ring. Thumbs up, thumbs down, elbows out, elbows in, legs apart, bump out, a little more. Making a memory in my heart. Making a memory in my heart. To the King of bump out, a little more. What? In my heart. Making a memory in my heart. Making a memory in my heart. King of the ring. Thumbs up. संपूर्ण आवार सभा घेण्याकरता, लोकांच्या बैठका घेण्याकरता, याच्याकरता हे होतं. इथे अनेक खांब तुम्हाला दिसतील आतमध्ये. सर्व खांबांचं दे ऑल आर व्हेरी युनिफॉर्म इन देअर स्ट्रक्चर, इन देअर कार्विंग अँड इन देअर आर्किटेक्चर ऑल्सो. दे आर ऑल होमोजिनियस, व्हेरी सिमिलर टू इच अदर. तर आतमध्ये तुम्हाला दिसेल भारत मातेचा पुतळा तिथे उभा केलेला आहे. तो खूप नंतरचा आहे, तो ऐतिहासिक नाही, तो नंतरचा आहे. आणि भारताला जरी स्वातंत्र्य 15 ऑगस्ट 1947 ला मिळालेलं असलं तरीही या प्रदेशाला स्वातंत्र्य 17 सप्टेंबर 1948 ला मिळालेला आहे. हा इतिहास आपल्यापैकी अनेकांना माहिती आहे, अनेकांना माहिती नाही. त्यावेळेस 1847 17 सप्टेंबर 1847 जवळपास 13 महिन्यानंतर संपूर्ण भारत स्वतंत्र झाला. पण हे निजामाचं हैदराबाद स्टेट असल्यामुळे यांनी सही न केल्यामुळे त्या करारावरती हे विलिनीकरण करायला 17 सप्टेंबर जोडावी लागली. तो स्वातंत्र्य दिन 17 सप्टेंबर हा आम्ही हैदराबाद मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून साजरा करतो. त्याचं सेलिब्रेशन करता हे भारत माता मंदिर आहे. आणि पूर्वीचं मंदिर दरबार हॉल सारखं तिथे होतं, बट देयर वॉज नथिंग इनसाइड. बट देन लेटर ऑन दी पीपल विथ पेट्रियोटिक फीलिंग दे हैव इरेक्टेड दिस पर्टिकुलर स्टैच्यू हियर, जिसको भारत माता मंदिर बोलते हैं. अब ये जो इतिहास है 15 अगस्त और 17 सितंबर, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, इसलिए वो बताना जरूरी है. बाकी तो आप सब देख रहे हैं, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं. पढ़ने को टाइम नहीं है तो उसका फोटो निकाल सकते हैं और घर में पढ़ सकते हैं उसको, और ये यादों को ताज़ा कर सकते हैं. हाँ, सर को भी काफ़ी कुछ जानकारी है, तो मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि अगर वो कुछ बताना चाहेंगे तो जरूर अवश्य बताएं.
Atul for giving this honor to Aurangabad chapter for hosting this West Region Conference. And let me admit, and you will also accept, that the main architect was Mr. Atul. Yes. 3 cheers for Atul. में वो रेसिपी ये शेयर करेंगे कि इनके अंदर ताकत इतनी कहाँ से आती है। आपने हाथ टच किया, आवाज आती है। On behalf of ISTD, तहे दिल से, हाँ सबकी तरफ से हम औरंगाबाद टीम का बहुत शुक्रगुजार है और उनके लिए बोलना है जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। एक्चुअली देखिए ये कि जो टुगेदर वीकेंड जो थीम रखी थी मिलके उसको चरितार्थ इम्प्लीमेंटेशन किया। Together we have done it. टुगेदर वी हैव डन इट, बट श्रेय गो तो पहला अपने महामहिम श्रीमान जयप्रकाश वाकड़े साहब, हमारे को मार्गदर्शन चाहे कहीं भी आगे निकल जाए, बड़े भ्राता श्री है। और दूसरे उत्पल मूर्ति, हाँ, कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर, फिर हम तो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलो, संयुक्त राष्ट्र काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ कैबिनेट, संयुक्त राष्ट्र श्री छत्रपति संभाजी नगर के मिनिस्टर, ये और एक खजांची अर्थमंत्री, और ये भी है। इन्होंने मल्टीपल रोल निभाए। आज मैं चल पा रहा हूँ तो ये एक मॉडल है सर, और हम इसको लिखना चाहेंगे। आई विल राइट अप कैसे रीजनल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई भी कॉन्फ्रेंस इतनी अच्छी हो सकती है। गेलो नाही, इकडेच थांबलो, मानी नहीं लगा हमको। 72 घंटे एंजॉय किया, हमने भी किया। जय हिंद। तो जैसे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, उसके बदले में आप क्या बोलोगे? जय हिंद। बच्चा लोग, जो भी हमारे यहाँ आएगा, जितना भी गेस्ट आएगा, उसको आप क्या बोलोगे? जय हिंद, लाइक दिस। ओके? यस मैम। एक प्रैक्टिस करो, बोलो जय मैम। हाँ।